Hello everyone! So today we're going to talk about some prepositions of place and preposition of time. And these are at, in and on. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं prepositions के बारे में, जो कि on, in and at होती हैं. ये prepositions place को जाहिर करती हैं. कौन सी जगह है places को जाहिर करती हैं in, at और on. So without wasting time, let's dive in. Let's get through the difference between at, in and on. Firstly हम बात करेंगे at के बारे में. ये preposition किसी बंदे, किसी चीज़ की जगह को जाहिर करती है, उनकी places को जाहिर करती है. For example, if we say someone is at the door, that means we're saying just his place, that someone is standing next to the door. We're just explaining his place. इस example में हम direct person की location बता रहे हैं कि वो दरवाजे के सामने खड़ा है. He is standing at the door. तो at का मतलब हम डायरेक्ट उसकी जो भी पोजीशन है उसके बारे में बता रहे हैं. So let's go through the second preposition, which is in. In हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को किसी चीज के अंदर डालते हैं तो हम in कहते हैं. For example, I'm just putting some coins in the box. And in this example, I'm saying just I am putting inside. So when we are putting something into something big, we say we are putting in. इस example में बताया गया है कि हम अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ में डालें, यानी coins को अगर हम box में डालें तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं. Let's get through the preposition number 3, which is on. जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी हो उसके लिए हम on यूज करते हैं. One thing is on the top of something else. Let's have an example. 3 books are laying on the table. Laying or 3 books are on the table. It means that I'm describing the one thing on the top of another thing, that the books are laying on the table. So books are on the top of the table. इस example में on को यूज किया गया है क्योंकि किसी एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ को रखने में ऑन यूज़ करते हैं. जैसे कि एक टेबल है, उसके ऊपर हमने बुक्स रखी हैं, तो एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखने पर हम ऑन यूज़ करते हैं. So that's why we're just saying that 3 books are laying on the table. On. Let's get over through the prepositions of time, but they are same as before, and they are in, at, and on. But this time they are going to be used differently. So firstly we're going to use the preposition in. जब टाइम के लिहाज से preposition का यूज करें, उसमें in को parts of the day यानी morning, evening, afternoon, इस तरह के times के साथ हम in यूज करते हैं. months के साथ, years के साथ, season के साथ, इन सब के साथ हम in यूज करते हैं. For example, he reads in the evening. There is use of in because there is the part of the day like evening in the sentence, so we're gonna use in. इस sentence में in इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें part of the day यानी दिन के किसी भी हिस्से का एक वक्त आ गया है. जैसे कि evening, यहाँ पे morning भी हो सकता है, afternoon भी हो सकता है, night भी हो सकता है, तो इन सब के साथ in लगेगा. Let's get through the second preposition of time, which is at. At हम दिन के किसी भी हिस्से में, किसी भी टाइम में यूज कर सकते हैं. जैसे कि noon के साथ, night के साथ, midnight, किसी भी वक्त, कोई भी वक्त हो दिन का, उसके साथ हम at यूज कर सकते हैं. Let's get through an example, which is I go to work at 8 o'clock. इस example में हमने 8 o'clock के साथ at लगाया क्योंकि 8 o'clock दिन का कोई भी वक्त है, सुबह का 8 है या शाम का, क्योंकि हमने दोनों के साथ ही at लगाना है. दिन का कोई भी वक्त हो, कोई भी हिस्सा हो, उनके साथ हमने at लगाना है. Let's have one more example, which is he eats lunch at noon. Let's go through the last preposition of time, which is on. With reference to the preposition of time, we use on only with days. अगर हम preposition of time में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं या on का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सिर्फ days के साथ यानी दिनों के साथ हम on का इस्तेमाल करेंगे. For example, I play on Sunday. We will use on because there is a day, Sunday. इस एग्जाम्पल में हमने on इसलिए यूज़ किया है क्योंकि
एक दिन आया है संडे। तो जब भी हम ऑन यूज करते हैं टाइम के लिहाज से तो हम डेज के साथ ऑन यूज करते हैं। So these were some prepositions of time. I hope you liked it, and if you did, so hit the like and just subscribe this channel, and don't forget to share this video also. And see you in next video. Thanks for watching.